Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will see the introduction of this chapter, Algebraic Expressions. Okay, that is chapter number 12. So first I would like to explain you the algebraic expression. What is mean by algebraic expression? Before understanding algebraic expression, students, first I would like to make you acquainted with two of the parameters. Those are known as variables and constant, as you might be knowing it. See, variables are those quantity, students, whose values are not fixed, है ना. इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है. इट में कंटेन 1, 2, 3, 4, 500, 1000 एनी वैल्यू इट में ऑक्युपाई. ठीक है. एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय एनी ऑफ द लेटर दैट वी आर हैविंग इन आवर अल्फ़ाबेट. ठीक है. तो सपोज वेरिएबल्स x, y, z, a, b, c, m, n, o, p, anyone. Just you have to keep it in your mind that variables are those quantity whose values are not fixed. Means here we are having x, suppose, as variable. So x, the value of x is not certain, है ना. It may occupy 1, 200, 1000, 500, any value it may occupy. Okay, so that is why its value is static. It keeps on changing. Its value is not fixed. Now similarly, another parameter is constant. Constant means, students, these are those quantity whose values are fixed, like 1, 2, 3, 5, 6, 900, 1000, 1500. These all values, 19.6, okay, 7/8. These all values, whatever the values which we cannot change or the value which are fixed are known as constant. Okay, now when we are combining this constant एंड वेरिएबल, स्टूडेंट्स, जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल को हम कंबाइन करते हैं बाय एनी यूजिंग एनी अल्जेब्राइक ऑपरेशंस, है ना, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, है ना, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन वी आर गेटिंग द अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. लाइक सपोज हियर वी आर हैविंग फॉर कांस्टेंट एग्जांपल 4, 5, 6, 9. ओके, सो व्हेन वी आर एसोसिएटिंग देम by any arithmetic operation, like suppose addition, so x plus 4, what is this? This is known as algebraic expression, students. What is this known as? Algebraic expression. Now I would like to take you to the chapter simple equation. Simple equation में क्या था? यहाँ पे इक्वलिटी साइन दे देते थे, then it is becoming simple equation. Like when you are writing x plus 4 is equal to 9 or 0 or 7, means anyone, then the moment you involve equality sign it becomes simple equation. ठीक है. तो algebraic expression, now we are not having any concern with this simple equation. I have already explained you when I was teaching you simple equation. ठीक है. तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें algebraic expression पे फोकस करना है. algebraic expression पे क्या हमें समझना है? algebraic expression से कि constant और variable को किसी भी arithmetic operation से अगर हम जोड़ देते हैं then we are getting the algebraic expression. ठीक है. Now moving to next term, students, we are having term of an expression. ठीक है. Now what I told you, what is this? This is algebraic expression. ठीक है. Here this x is known as term. Similarly this 4 is also known as term. ठीक है. ये एक टर्म हुआ x और दूसरा टर्म ये 4 हुआ. ठीक है. Both are separately known as terms of expression. When you will see this x plus 4, it will be called as algebraic expression. When you will see separately x or separately 4, then it will be called as terms of expressions. ठीक है. Now moving to factors of terms, students. See, we are having different factors of terms, है ना. Like suppose if you will segregate this x plus 4, है ना, तो x plus 4, then here you will get x and here you will get 4. Okay, now this x is in the simplest form. ठीक है. This x is in the simplest form. It cannot be further divided. Similarly this 4 is also in the simplest form. It also cannot be divided further.
ठीक है. नाउ सपोज वी आर हियर हैविंग एक्स स्क्वायर. ओके, देन व्हाट वी विल राइट हियर एक्स स्क्वायर and here we will get 4. Now this x square can be further divided, that is x into x. So these are not, but these are known as factors of term, है ना. ये टर्म कहलाता है. सपोज हियर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी ब्रोकन इनटू एक्स स्क्वायर एंड देन 4 एंड देन एक्स स्क्वायर विल बी ब्रोकन इनटू एक्स एंड देन एक्स. सो दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स. सिमिलरली वी आर हैविंग कोफिशिएंट्स स्टूडेंट्स. ठीक है, कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं? लाइक सपोज वी आर हैविंग अनदर algebraic expression 5x plus 9. Okay, so here you have to look to the constant which is present before the variable. Like suppose here what terms we are having in this algebraic expression students? Here we are having the terms as 5x and then 9 and its coefficient, that is the coefficient of 5x will be 5. ठीक है, that is this one. Suppose we are having another algebraic expression 9y plus 6. So here coefficient will be 9. Means you have to look to the constant which is present before the variable. That is known as coefficient of the expression. Okay. Now next term is like terms and unlike terms. Very important topic students, like term and unlike term. Suppose we are having one expressions x y plus y x plus 9 plus 3 minus 2. Okay, we are having this one algebraic expression. ठीक है, तो इस algebraic expression में like term को हमें देखना है. like term को देखना है मतलब कि identify करना है. means what students? See, this is xy and this is yx. So here you have to see the variables whether all the terms are containing same variable or not. जैसे कि यहाँ पे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये दोनों टर्म में वेरिएबल जो हमारा है वो सेम है या नहीं, ये हमें देखना है. ठीक है, और एक बार once if the variable is same then you have to look to its power. ठीक है, like suppose here we are having xy and here we are having yx. यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई एक्स है, यानी कि यहाँ पे वाई पहले आ गया है, यहाँ पे एक्स पहले है. बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो वहाँ से हम क्या सीखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट बी ए. दैट इज सपोज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 4. देन here you will get 4 into 5. Now if you will multiply this students you will get 20 and if you will multiply this also then you will get 20. मतलब क्या, AB is equal to BA. तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो एक्स वाई और वाई एक्स है ये मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए ये एग्जांपल दिया. ठीक है, तो ये वाई एक्स और एक्स वाई दोनों भी लाइक टर्म कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि देयर प्रोडक्ट इज सेम. ओके, सो ये वाई एक्स और एक्स वाई और वाई एक्स दोनों भी लाइक टर्म कहलाएगा. नाउ सपोज वी आर हैविंग हियर एक स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो स्क्वायर. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग एक्स वाई स्क्वायर एंड हियर वाई स्क्वायर एक्स. अगेन दे विल बी लाइक टर्म. ठीक है, नाउ वाई बिकॉज यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे वाई का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे भी वाई का जो पावर है वो 2 है. मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और उसका पावर देखना है. नाउ सपोज आई पुट हियर 4. ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, तो भी अभी भी ये लाइक टर्म ही कहलाएगा. क्यों? यहाँ पे 4 है, ये 4 जो है वो कोफिशिएंट है. ठीक है, वो उसका लाइक टर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हियर यू हैव टू सी, यू हैव टू चेक ओनली द वेरिएबल्स. इफ द वेरिएबल्स आर सेम देन देयर पावर्स यू हैव टू लुक. इफ द पावर्स आर सेम देन यू हैव टू कंसिडर दोज टर्म्स एज लाइक टर्म्स. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, है ना, दैट इज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. सी, व्हेन वी आर हैविंग वन टर्म इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देन दोज टर्म्स आर नोन एज मोनोमियल expressions. Like suppose 4x, this is also algebraic expression because between 4 and x multiplication sign is there. ठीक है, तो ये जो 4x algebraic expression है ये मोनोमियल कहलाता है. यानी मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3.
tetra means 4, penta means 5, हेक्सा मीन्स 6, लाइक दिस इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो हमें यही देखना है। मोनोमियल्स मीन्स, मोनो मीन्स 1, मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि टर्म हमारा सिर्फ 1 होगा, मतलब एक ही टर्म होगा, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे monomials। ठीक है, सिमिलरली इफ वी आर हैविंग टू टर्म्स, लाइक सपोज हियर +3 इज देयर और -3 इज देयर और -2, एनी वन। ठीक है, तो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, नाउ सपोज वी आर हैविंग अनदर टर्म एडेड टू इट +2z। ठीक है, देन दिस वन विल बी कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। सिमिलरली अ एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो दिस वाज योर पॉलिनोमियल्स, अबाउट पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, and then we are having addition and subtraction of algebraic expressions, like see whatever the terms we are having in the algebraic expression students, जो भी हमारा टर्म है algebraic expression में उसे हमें ऐड कैसे करना है, subtract कैसे करना है, these all are just as you have studied in the chapter इंटीजर। ठीक है, जहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे भी हम इंटीजर के लॉ को यहाँ पे इस्तेमाल करके एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन पूछेगा वो हम ऑपरेशन को अप्लाई करके, ऑपरेट करके, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स हियर। Now next term is finding the value of an expression, that is how to find out value of any expression, any particular value of any expression. Like suppose we are having this, here we are having this expression 4x plus 3. Okay, now if I ask you to find out its value at x is equal to 0, है ना, suppose here the value of x is given 0, so how you have to solve this? So here 4, as I told you students, between 4 and x there is multiplication sign, and the value of x is given as how much? 0. So instead of writing x we will write there 0, है ना, कैसा? See 4 into 0 plus 3 equals to, ठीक है, now 4 into 0, when any number multiplied by 0 then we know the result is 0. So 4 into 0 you will get 0 plus 3. 0 plus 3 is nothing but 3. So the value of this expression 4x plus 3 at x is equal to 0 is nothing but 3. So like this we are finding out the values of the expressions at any particular given variables value, है ना. Like suppose if I gave you here x is equal to 1, how to find out the value of x is this expression at x is equal to 1. So what we will write here, 4x plus 3 is there, so here we will write 4 into, instead of writing x we will write here 1. Why? Because the value of the variable is given 1, ठीक है, and then plus 3 as it is. Now 4 into 1 we are having 4 plus 3, if you will add them you will get 7. So like this we are finding out the values of the expression at any particular given value, ठीक है. So this was your last topic students that you had to learn in this chapter for solving the numericals of this exercise, and if needed students then I will explain you in the detail when we will solve the numericals of the exercise. Okay, so this was your introduction part of this chapter, algebraic expression. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.